Hi there, how are you all? Every time I ask you how are you all, you don't ask me how I am. I'm doing well. Just to come to the point straight away, I did Act 1, Scene 1 and Scene 2 with you. Today I'll be teaching you Act 1, Scene 3, and with this scene, the act will be over. Okay? I have sent you the notes. I hope you are copying it and keeping your copies up to date. And after this is over, then I will be starting language with you. So whatever I'm sending you, please see that you finish your work in the fair copy. And this goes for all the 4 sections. You don't know which section I'll be teaching next year, but that's a suspense. Next year in the sense, hopefully after July. But that's a suspense, but I hope that you finish your work and I hope that we get to meet each other soon. Okay, so again a recap of what we have done. We are introduced to Antonio, Bassanio. They are very contrasting and opposite in character, but they are best of friends. We are introduced to Portia and Nerissa. We are told that there is a will made by her father, that he has 3 cascades made up of gold, silver and lead, and one of the cascades has the picture of Portia in it. So whichever man will be choosing the right cascade will be getting married to Portia. And to try this luck, Bassanio wants to go to Belmont. And to go to Belmont, he needs money, for which he has asked Antonio. Unfortunately, they don't have the money, so they go to the market to get a loan. Now, in this third scene, we meet the most important character of the play, whose name is Shylock. जैसे हर हिंदी फिल्म में एक विलन होता है, वैसे ही हमारी स्टोरी में भी विलन है, जिससे हम इस सीन में मिलेंगे. और नेचुरली स्टोरी है, हीरो आ गया, हीरोइन आ गई, हीरो का दोस्त आ गया है, तो विलन को तो आना ही है. सो व्हेन दे गो टू द मार्केट टू गेट द लोन, सो नेचुरली स्टोरी का एंगल, दिस मच वी ऑल नो, सीइंग ऑल दीज हिंदी मूवीज़, हम लोग को समझ में आ जाता है कि अब क्या होने वाला है. तो नेचुरली ये लोन लेने के लिए वी गेट टू मीट Shylock. Okay, so Bassanio meets Shylock first. Now let me tell you something about Shylock. Shylock is also a merchant of Venice. He is a Jew. Okay, a Jew is a sect of Christianity. जैसे शिया और सुन्नी होते हैं, पर वो दोनों मुस्लिम्स होते हैं, वैसे ही जूस और कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये सब लोग क्रिश्चियंस होते हैं. बट जूस आर मोर ऑर्थोडॉक्स पीपल, वाइल कैथलिक्स आर नॉट सो ऑर्थोडॉक्स. ओके, और उस ज़माने में अगर आपने मूवी देखी होगी, मैंने भेजा था आपको, इफ़ यू हैव सीन द मूवी, देन यू मस्ट हैव seen that they did not get along well. Jews and Catholics did not get along well. So Shylock does not like Antonio for 3 reasons. Number 1, Antonio is a Catholic, Shylock is a Jew. Number 2, they are both businessmen, they both lend money, but Shylock is a proper money lender जो interest लेता है, पैसे जब देता है तो, और जो एंटोनियो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है. तो इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम्स डाउन, विच ऑल्सो हैम्पर्स द बिजनेस ऑफ Shylock. So he does not like Antonio. And thirdly, you must have seen in the movie. If you have not seen, please see it again. कुछ बातें मैं बार बार अगर रिपीट कर रही हूँ आपसे, तो उसका एक रीज़न है. And I hope you understand the reason. If you do it, it's for your own benefit. If you don't do it, it's your choice. So third reason is that there are many times that Shylock and Antonio have gone into an argument. Antonio has abused him, spat on him, उसके मुंह पे थूका भी है, and even called him a dog in front of everybody. So public humiliation.
and Shylock doesn't like Antonio. So when Bassanio goes to him and says that I need help and I want 3,000 ducats and Antonio will be the security, then Shylock is surprised, he's shocked, and he says that how come Antonio needs me and my help? I'm shocked that he has come to me. But they are doing business, so they are being very professional, and he says, see Antonio, see Shylock, I need money, I need 3,000 ducats and I will repay it back within 3 months and Antonio will be the security. So if you want to give me, it's okay. If you don't want to give me, it's perfectly fine. हम लोग कहीं और से पैसे ले लेंगे. तो शायलोक कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, ये मत सोचो. मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि एंटोनियो की शिप जो है वो सी पर हैं, और सी पर जब शिप्स होते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क पर होते हैं, बिकॉज देयर कैन बी सी पायरेट्स, there can be sea storms, and God forbid if anything happens and Antonio is not able to pay my money, then what will happen? So he says कि आप इस बात के लिए परेशान ना हो. Definitely we will make some arrangements to pay you back the money, but are you ready to give us the money? And he says yes, I am ready, but before that I would like to meet Antonio. जब बसानियो और शाइलॉक आपस में बात कर रहे थे यही सारी बातें, तभी सामने से एंटोनियो आ जाता है. एंड ही सेज ओ वेल एंटोनियो, और अपने मन में बोलता है कि ओ द डेविल हैज़ कम बिकॉज ही डजंट लाइक हिम. एंड एंटोनियो सेज डिड यू से एनीथिंग? नो नो आई डिड नॉट से एनीथिंग टू यू. आइए, सुना है कि आपको मेरी मदद की ज़रूरत है. सो ही सेज या. एंड देन एंटोनियो आस्क्स बसानियो, क्या तुमने बताया नहीं है शाइलॉक को कि हाउ आई नीड हिम एंड हाउ आई नीड हिज हेल्प? एंड शाइलॉक सेज yes, he has told me that you need 3,000 ducats and for 3 months, is that right? And he says yes. And then sarcastically he says, and you will stand as security, right? And he says yes. Is there any problem in that? कहते नहीं, मैं तो बस ये देखना चाह रहा था या ये सोच रहा था कि Antonio, you have been so rude to me all the time. You have abused me, you have spat on me, you have insulted me in public, and for all these favors that you have done to me, और इतना सारे जो एहसान तुमने मेरे पे कर रखे हैं, ये सब गालियाँ वालियाँ देकर, उसके बदले में तुम मेरे से हेल्प मांग रहे हो. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं कि how should I go about it? So Antonio is also no less, though he's a very serious kind of a person. He talks less, but जब मुँह खोलता है ना तो थोड़ा ख़तरनाक ही बोलता है वो. तो एंटोनियो कहता है कि see Shylock, I know you are a money lender, right? You take interest. So if you want to lend money to me, lend to me according as if you are lending it to a enemy, not as a friend. तो वो बोलता है उससे कि मतलब, तो कहते हैं कि देखो, जब आप अपने दोस्त को पैसे उधार देते हैं तो आप उस पे ये इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, और जब आप अपने दुश्मनों को या ऐसी जिससे आपका कोई लेना देना ना हो, ऐसी जो क्लाइंट्स होते हैं, जब आप उनको पैसे उधार देते हैं तब आप उनसे इंटरेस्ट लेते हैं. सो इट्स बेटर दैट वी शेयर अ रिलेशनशिप of that of an enemy rather than that of a friend. So better that you lend me the money as if you are going to lend it to a enemy and not as a friend. तो बीच में शाइलॉक थोड़ा सा बाइबल को भी कोट करता है, और अपने जो मनी लेंडिंग का जो बिजनेस है, एक्चुअली इन क्रिश्चियंस इट इज़ नॉट अलाउड. नो क्रिश्चियंस लेंड मनी according to the Bibles, but Shylock is trying to prove it that according to the Bible it is correct. So Antonio is like he cannot understand why Shylock is quoting the Bible, और Shylock उसको कहता है कि
तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम लोग ने तो तुमने तो कभी बाइबल ढंग से पढ़ी नहीं है, तो तुम समझ नहीं पाओगे कि ये सब बातें क्या है। मैं तुमको लोन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुमको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। एंड देन एंटोनियो सेज हियर डेविल स्पीक्स, और वो बोलता है किस टाइप का बॉन्ड है ये। सो ही सेज कि लिसन, आई विल कॉल माय लॉयर, we'll meet in the evening, I'll bring all the papers and you sign it। एंटोनियो बोलता है पर इस बॉन्ड में है क्या? तो बोलता है कि इट्स वेरी सिंपल सी, इन द बॉन्ड इट्स रिटन दैट आई एम गिविंग यू मनी फॉर 3,000 ducats for 3 months, and in case if you are not able to pay back this 3,000 ducats in 3 months, then you will be then Shylock will be taking a pound of flesh from any part of Antonio's body। और जब वो ये बात सुनता है तो इतना ज़ोर से एंटोनियो हंसता है और बोलता है कि see, just now the devil was quoting the Bible and now he's come out with this brilliant scheme that if I don't return back the money, then he will be cutting a pound of flesh from my body। So कहता है कि you are an excellent Jew, Shylock, and more excellent as a businessman, and I'm ready to sign this bond। जब बसानियो ये सुनता है तो वो उसको डिस्करेज करता है। एंटोनियो से कहता है कि सी, आई अंडरस्टैंड दैट यू एंड शाइलॉक डोंट गेट अलॉन्ग वेल एंटोनियो, बट फॉर माई सेक इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू साइन सच अ बॉन्ड। रहने दो, हम लोग कहीं और से पैसे अरेंज करेंगे, तुम ये बॉन्ड साइन मत करो। बट नाउ इट्स अ मैटर ऑफ ईगो। तो एंटोनियो कहता है कि तुम परेशान मत हो बसानियो, within 10 days my ships will be returning back, और मैं इसको 3,000 से ज़्यादा ही पैसे वापस कर सकता हूँ, तो कोई बात नहीं, I let me sign the bond। And Bassanio again and again he tells him, he warns him not to sign the bond, और वो बोलता है कि मेरे चक्कर में तुम अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस या अपनी लाइफ को रिस्क पे मत डालो। तो कहता है रहने दो, डोंट वरी, हैव फेथ इन मी, ट्रस्ट मी, एंड आई विल बी एबल टू रिटर्न बैक द मनी वेरी सून। वी वोंट बी इवन वेटिंग फॉर 3 months, within 3 months I'll return back the money to Shylock, so let me sign the bond। And then the story has to go on further। तो वो बॉन्ड साइन करने को एंटोनियो राज़ी हो जाता है। तो शाइलॉक उसको कहता है कि ठीक है, तुम तैयार हो तो मैं सारे पेपर्स तुमको बॉन्ड के शाम को आके देता हूँ। बसानियो से कहता है ठीक है, तुम हमारे साथ डिनर कर सकते हो, एंड देन वी कैन टॉक अबाउट दिस एंड यू कैन गिव अस द पेपर्स। सो शाइलॉक सेज कि आई कैन टॉक विथ यू, I can walk with you, I can do business with you, but I can never eat in your home because you are a Catholic, I am a Jew, and I would definitely not even want to drink the water from your house, leave alone having food। So this is not done। You want money, I'll give you your 3,000 ducats, I'll meet you in the evening at dinner time, I'll come to your place, hand you the money, hand you the bond, and that's it, right? So here the third scene is over, fine। So hopefully from here on the literature part of for the summers I'll be putting a stop to it, and after this I'll be sending you the notes, please complete it, and in the next week I'll be starting with some revision of language। Revision I'm saying because you have done all the topics in class 11th, they are just a repetition of what we will do in class 12, right? So I'll start with the easy topics and then we'll later on move to the difficult ones, and hopefully again I'm reminding you, right from the beginning, from the poems to the short stories to the drama, all the lectures are on YouTube। Anytime you get time, you go on YouTube, type my name,
or subscribe to the channel, because it's on public. Any channel, even the other teachers, go to them, just listen to your videos again and again, understand them, read the chapters after listening to the videos. I'm sure you will understand them perfectly well and complete your notes. Okay? So take care, stay safe. Bye bye.